Yes. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Shahab Karni from the studio of I-95 in Washington. I'm here with enterprising young gentleman called Tarun Pudel. Tarun, how are you today? मैं ठीक हूँ. Thank you for inviting me, साहब अच्छा, कौरने साहब. थैंक यू. तो तरुण जी को हमने इनवाइट इसलिए किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज ही इज वन ऑफ द लीडिंग activist in Nepali American communities in DMV area, meaning DC, Maryland, Virginia. So I said, well, let me say, because recently, in recent years, Nepali American community has grown in numbers in DMV area, economically, business wise, of course, political engagement is enhancing, is growing in social activities. So that's the reason I invited, and I'm grateful to Tarun today, who's joining me. Tarun ji, kaise hain aap? ठीक ठाक हूँ. बहुत अच्छा, अच्छा है. मौसम भी अच्छा है. आई नो, आई नो. अच्छा तरुण जी, बताएं कि ऑलमोस्ट डीएमवी एरिया में क्या नंबर है नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी का? जस्ट अ गैस, वर्जीनिया, डीसी, ये मैरीलैंड में नेपाली और भूटानी जो नेपाली भाषा प्रयोग हाँ, करते हैं उसका नंबर 70 टू 70,000 टू 100,000 तक है. That वेरी means गुड, वेरी गुड. सो मोस्टली दे आर स्टूडेंट्स और दे आर इन बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, एंड क्या है डेमोग्राफिक में? वो मोस्टली वो दे काम करते हैं. दे वर्क इन मोस्टली इन सर्विस एरियाज. अच्छा, स्टूडेंट भी है और एंटरप्रेन्योर्स भी है हाँ, हाँ. एंड गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं. हम्म. अच्छा, तो recent years में, I will say in last 15 years, I've seen a lot of people getting into small businesses and growing fast. तो do you agree with me कि काफी बिजनेस में आ रहे हैं लोग, रियल एस्टेट में है, गैस स्टेशन में, रेस्टोरेंट बिजनेस में? जी जी. वही जो ज़्यादा लोग सर्विस सेक्टर में है. गैस स्टेशन, सबवे, 7-Eleven और छोटा वाला स्टोर रन करने और कैब ड्राइविंग और डिलीवरीज, रेस्टोरेंट. दीज आर ये जगह है. नेपाली लोग बहुत इंगेज है और ये डीसी वर्जीनिया एरिया में बहुत काफ़ी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम होते हैं जो आईटी में और ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, प्रोक्योरमेंट में, इसमें भी काफ़ी लोग अभी एंटर आ हो रहे रहे हैं. हैं. अच्छा तरुण जी, अभी रिसेंट ईयर्स में आई थिंक वन और टू फ्रॉम नेपाली अमेरिकन दे गॉट इनटू हाउस ऑफ डेलीगेट इन स्टेट ऑफ मैरीलैंड. मैं देख रहा हूँ कि जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस में आप लोग बड़ा इंगेज हो रहे हैं. गिव अस अ रन डाउन के क्या प्रायोरिटीज हैं और क्या एक्टिविटीज नजर आती हैं आप? नेपाली लोग जो फर्स्ट जनरेशन है उनका मानना है कि क्या कैसे अमेरिकन मेन स्ट्रीम में अगर हाँ, हम इधर आए तो हमारे हमारे बाल बच्चा के लिए, फ्यूचर के लिए कैसे हम अमेरिकन जैसे हो सकते हैं. दे वर्क हार्ड, वेरी हार्ड, हाँ. डेफिनेटली. एंड अभी मैरीलैंड का हाउस ऑफ डेलीगेट्स में हैरी भंडारी 2 वर्ष पहले वो इलेक्टेड हुए फर्स्ट टाइम. और इंडियन हेड म्यूनिसिपालिटी में सेकेंड बार, 2 बार किरण सिटौला, और राउंड सिटौला कहते हैं उनको, वो भी इलेक्टेड हुए. और अभी इलेक्शन हो रहा है हरंडन में. वो री इलेक्शन के लिए प्रदीप ढकाल वो फाइट कर रहे हैं नवंबर 3 के इलेक्शन में भी. कि नेपाली लोग वो इलेक्शन के कंपटीशन में आ रहा है कि नंबर भी ज़्यादा है. और जो आ रहा है वो जो यंग यंग लोग आ रहा है, इसलिए यंग लोग काफी हम हैं. लोग अराउंड बिलो 40s का है सब लोग. ये इससे क्या मैसेज देते हैं और संकेत देते हैं कि फ्यूचर में ज्यादा यंग लोग और सेकंड जनरेशन वो भी आने के लिए वो रास्ता बना रहा है. तो तरुण जी, इसकी क्या वजह है? मैं देख रहा हूँ कि एज कंपेयर टू अदर न्यू अमेरिकन कम्युनिटीज, नेपाली अमेरिकन आर वेरी एक्टिव इन अमेरिकन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के क्या, ये क्या वजह, क्या है इसकी, रीजन क्या बनी? इसका रीजन तो एक है, ये हो सकता है
कि नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए बहुत लंबा लड़ाई चला. Very good. Mm-hmm. They have the 104 years autocratic Rana regime. After that, instability and kingship there. There was no democracy or multi-party system there, and they have Mm-hmm. different fight over there. Mm-hmm. Basically, pro government versus anti government. वो लंबा काफी टाइम पर चल रहा है. और जब जब डेमोक्रेसी आया नेपाल में 1990 में, उसके बाद people can started to get passport. Before that, even average people they won't get passport, Mm-hmm. Acha. and Acha. they have the opportunity to uh, come go abroad. Hmm. And the first choice was in 90s or first decade of the 20 this century, that Mm-hmm. America is the best place, Hmm. financing place. So people came over here as a student, and they have the one diversity visa lottery program. Every year, around 5,000 Nepalis they win the lottery for the permanent residency over here, and they come with their family. That accumulating वो पढ़ करके जो आए हैं उसका पास पेपर भी है कि वी आर as equal as the American. Why should not we try? And they must पिछले जो 20-30 साल में ત્યાં बहुत इलेक्शन हुआ, बहुत बार लोकल इलेक्शन, सेंटर का और रीजनल प्रदेश का इलेक्शन. कुछ ज्यादा लोग इलेक्शन में उधर इन्वॉल्व हुआ. फिर इधर आए से भी क्या हुआ, everywhere they go they feel like whether we are discriminated or we are losing our opportunity because of race or color or skin, these things. Then why should not we go how to change that aspect or perspective? Then we should go and involve in the to making the policy level. That's why people are more interested, more used to be engaged in politics, I believe. What an example, I mean, in the mainstream American political process as compared to, we have got Chinese, we have got Korean, the Indian, Pakistanis, and Bangladeshis, but Nepali being in not in that big number, but you guys learned the lesson in a very fast track, and congratulations. And this Thank you. Nepali American community, my viewers, can be a good role model how to integrate into the mainstream, political process and public policy. This is the way forward. So Tarunji, I'm amazed. It's a very powerful story. अच्छा आप ये बताइए recently some of the Nepali Americans like you have formed a coalition for supporting Biden. तो उसका क्या जी. है स्टोरी जरा सा हमें बताएं. Tell us please. जब ये इलेक्शन का बात हो रहा है कि नेपाली लोग तो फर्स्ट दे आर इमिग्रेंट. Right. जब ट्रम्प आए, he always is attacking against the immigrant, their ठीक. family members, like हम्म. they are making more hard. And the other thing is healthcare. हम्म. ठीक. Healthcare, Obama, affordable care, जो लोग जो उसके benefited थे, that is going to curtail. मोर स्ट्रिक्ट वो बना रहा है. और आए एजुकेशन के बाद कि जो लोग आए हैं कि एजुकेशन, जो बहुत लोग एवरी ईयर नेपाली, नेपाल इज द 10th country to send the student in America. अच्छा. हम्म. That big number of student comes, and they enroll in college, but they start to give visa for the student. Oh, so go to the online. And why should we spend money to the online if they are not getting visa? And Understand. before Understand. different, So the participation from your community is very much policy driven, and whatever the decisions are made that can help new immigrants, you are going to be supporting that candidate. Is that right? that absolutely right, because immigration and policy makes us our life and our future uh, different. The See, immigrant yeah. issue. So see, this is the beauty of the political process and the system, that if you are part of that policy making, decision making system, then you can empower your communities.
I think correct. other communities need to learn from you guys that what when we say वो लोग पूछते हैं यार हम political process में जाके हम क्यों वोट डालें क्यों हिस्सा लें क्यों participate करें so आपकी जो community है जैसे good role model why you are doing this और क्या क्या issues हैं जो affect करते हैं आपकी daily life को और ना इसमें please मैं एक educate बात, करें जी thank you for your compliment for this young immigrant community. और दूसरा right बात ये भी हो सकता है होता है कि we don't deserve 4 more years like the same way. We and why want not and why not we want make America kind again. okay I like that so now America great And again so you America want to make should America lead the kind again world. Mhm. America should lead the world. The climate change or environment is degrading, and that is causing the all hurricanes and different things. That is a reality. And who are coming from the innovation? They are the immigrant from India or China or Pakistan. The immigrant, young immigrant, they are making America better. Their innovation, their study, their hard work. The money is, yes, of course, that's the part. Since we come over here, and as you earlier mentioned, पहले कि आप कि जब तक हम वो पॉलिसी बनाने के जगह और कानून बनाने की जगह नहीं पहुंचते तो हमारा कौन सा लोग सुनेगा हमारा नंबर ज्यादा नहीं है हमारे पास पैसा भी ज्यादा नहीं है इलेक्शन में और सोसाइटी में क्या काउंट होता है अमेरिकन का डू यू हैव अ मनी डू यू हैव अ नंबर वी डोंट हैव बोथ then what we have activism we have our education participation education so we yeah want to be visible how come that then yes we got the education yes but if as South Asian or other people coming over there and there is a white or the American people is there in interview who gonna choose there comes and other thing is Kamala Harris at least she is from immigrant daughter right from South Asian mother. My daughter might think that, oh, I can be the president of the America. Since Kamala is, can be then, she is also daughter of the immigrant from Jamaica and India. Then, for their sake, for our children's sake, we are more vigorously participating. We can collect some money, and give the words, and we help each other and our stern values that our family values that we still want to keep up over here. excellent so Tarunji what will be the way forward going making your communities more powerful more engagement get the word out get the message out what I mean what is the way forward what do you suggest and how can we help you also in that The basic thing is that we want to learn every aspect of life, like culture, language, technology, entrepreneurship. For there, if someone is trying to do something, then we can help and encourage them. And if they need vote, we can vote for them. If they need support, technical or any kind of leadership, that will help. So that not only that one that we are trying to preserve our culture religion whatever we inherited from our ancestor that we want to transform to our children for that small business owners or those who work for the businesses or big companies there we these people are helpful working hard and this country is made by immigrant as Joe Biden said, only some Native Americans, though those are in very small numbers, other everybody came from outside. All are 3, 4, 5, 6, 7 generation, but all are immigrant.
Yes, somebody came earlier. Those who True, came, true. So this is a nation of immigrant. Yes. So, point very well taken. Tarunji, I'm so grateful to you, and in future also, we will be partnering with Nepali American communities. If you want to get the message out, keep inviting you, and through you, more speakers so that we know and the community can integrate into the mainstream fast. So, Tarunji, thank you very much. I'm so thank grateful you, that you were able thank to you, join me. thank you, Shab Korne Shab, and your channel I-95. I used to work for television too, like long ago. So All just right. remind, and it was Oh, pleasure talking with you. thank you. Likewise, sir. Thank you very